we were on this particular question. The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain, and as a strategically to counter China's political and economic dominance. Explain the statement with examples. Yes. So who wants to give me the structure? Yes, Reyes. Hello, sir. Yes. Sir, so in intro, I will start with how China is increasing its importance, Mm-hmm. and then I will give the heading that how West is fostering India as an alternative to reduce China's dependence on supply chain. Okay. So first will be West fostering. India, ठीक है. India. and then I will use the same framework as we always use, that geopolitical, geoeconomic, defense, Okay. and then the next heading will be a strategy to counter China's political and economic dominance. Mm-hmm. तो And इसमें framework तो वही रहेगा, but yeah, one right. heading is missing in this. And after that, one heading will be how Hmm. India can improve. No, Like, no, what are the limitations? How no. can See, India? before this, what you have to mention, कि China's political and economic dominance. ठीक है. जो डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन है वो इकोनॉमिक में आएगा, इन इकोनॉमिक डोमिनेंस. So this keyword will also be addressed. Then this keyword, China's political and economic dominance. Then this will be addressed under economic, and then you come to the fostering India as an alternative. Okay, so that would be your structure for this particular question. ठीक है, ये क्लियर है. अब यहाँ पे सिंपल इन्होंने framework you will be using the same, but headings will be just two. So one will be political, second will be economical. तो political में out of 5 you will add geopolitical and second multilateralism related points. Economic में you will add the points related to the again the geoeconomics, technology, connectivity. ठीक है. And defense and security हमारा जो बचा है that will come in defense and security. ठीक है. तो इसमें आपके 6 पॉइंट्स बनेंगे. दैट विल बी वेरी ब्रीफ. You can use the diagram or flow chart also. ठीक है. Then maximum, so this should be completed if this is your page. तो यहां तक आपका this part should be completed. ठीक है. From here to the end, यहां तक आपका this part will come. The West fostering India. ठीक है. अब इसमें पॉइंट्स वी ऑलरेडी नो. चाइनाज राइज वाला हमने कल ही किया है. ठीक है. तो जियोपॉलिटिकली चाइना इज टॉकिंग अबाउट दी और चैलेंजिंग द यूएस लेड ग्लोबलाइजेशन, इंडो पैसिफिक एक्सपांशन अंडर बॉइलिंग फ्रॉग स्ट्रेटेजी. ठीक है. देन फ्रॉम डिफेंस एंड सिक्योरिटी पीएलए मॉडर्नाइजेशन उसी में आएगा. ठीक है. देन ग्लोबल साउथ आउटरीच. 3 से 4 आप 3 पॉइंट उसके अंडर लिखो. इकोनॉमिक में डोमिनेंस में एक तो इंटीग्रेटेड इन ग्लोबल इकोनॉमी, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज. ये 4 पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो. दैट हाईलाइट्स द चाइनाज डोमिनेंस, राइट. देन हाउ वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया व्हेन geopolitical
एंगल कि दी यहाँ पे अगेन जियो पॉलिटिकल में क्या आता है कि दी पॉलिटिकल रिलेशंस या पॉलिसी लेवल पे, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ द इंडो पैसिफिक और यूएस इज इंडो पैसिफिक pivot and EU's Indo-Pacific strategy, gives India the central role or highlights India's central role. ठीक है? What else you can highlight here? ठीक है, एक ही लिखो चलो. In terms of geo-economics, जो हमने कल भी किया था, China+1 strategy, supply chain resilience initiative. ठीक है, then the FTA, for example, recent India UK FTA. ठीक है, then technology partnerships. ठीक है, India EU technology partnership. इसमें ये then defense and security, they have accepted India's role as the net security provider in Indian Ocean. Second, the joint exercises like Malabar. Right. Third, enhancing the interoperability under foundational agreements. With US. इसमें आपको सेकेंड एग्जांपल देना है तो वी हैव द लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद जापान, है ना? दिस देन कनेक्टिविटी के अल्टरनेटिव टू BRI थ्रू एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर विथ जापान एंड ब्लू डॉट नेटवर्क थ्रू कॉड. वो ठीक है, देन एट मल्टीलैटरल लेवल की दी रिवाइटलाइजेशन ऑफ कॉड. ठीक है, दिस देन उसमें भी अगर आपको लिखना है कि वेस्टर्न कंट्रीज प्लस एशियन प्लस Central Asian republics all view India as the counterbalance to China, है ना? अब ये सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिखे थे, वही वाले पॉइंट्स आपके इधर आएंगे. इसमें बस ऑल यू हैव टू पुट इज द एग्रीमेंट्स, जो भी रिसेंट एग्रीमेंट्स हैं. जैसे फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हमारे जो थे, नेम मेंशन कर सकते हो, लिमोआ, कॉमकासा, बेका, जो भी आपको याद है. इनों में से एक भी है तो भी चलेगा. राइट, सो दिस इज हाउ वेस्ट इज fostering India as an alternative. ठीक है, ICET also you can write, right? वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सरसाइज, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर. ठीक है, ये क्लियर है? यस, आदर्श. Sir, am I audible? यस यस. Sir,
जी जी, दो हेडिंग्स है हमारी, चाइना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस और दूसरी वेस्ट फोस्टिंग इंडिया। तो हम्म, सर मतलब ऐसा दिख तो डिमांड तो एक्सप्लिसिट नहीं है, बट क्या हम एक कनेक्टिंग लाइन डाल सकते हैं? मतलब क्या उसकी जरूरत है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे चाइना का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस है वो एक रिस्क है, क्योंकि चाइना वेपनाइजेशन करता है अपने इकोनॉमिक डोमिनेंस का, चीजों का। हम्म। तो वो चीज क्या हमें मतलब वो कनेक्टिंग लाइन डालनी चाहिए या ऐसे ही मतलब रखना चाहिए? तो चाइना का डोमिनेंस हमने यहाँ पे मेंशन किया ही है ना। नहीं सर, बट वो रिस्क कैसे है वेस्ट के लिए, और वेस्ट क्यों पिवट कर रहा है डीकपलिंग के लिए? वो तो क्या ये हमें पॉइंट है कि हाउ वेस्ट इज डिकपलिंग फ्रॉम चाइना अंडर चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, है ना। तो वही अब ये इम्प्लिसिट हो जाता है कि इफ यू पुट दी कनेक्टिंग लाइन देन दैट्स फाइन। ऐसे कोई गलत आज सच नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या, अब चाइना का आपने डोमिनेंस लिखा, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पीएलए वगैरह, उसके बाद इन दिस कंटेक्स्ट, ये या फिर आपको अगर सेंटेंस बनाना है तो यू कैन राइट कि एज पर अलेक्जेंडर कि चाइना विल एस्टोनिश द वर्ल्ड व्हेन इट विल वेक अप फ्रॉम द स्लंबर। ठीक है, सो वो कोट लिखो, एंड इन दिस कंटेक्स्ट वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया। ये आप हेडिंग कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो दैट कैन बी योर कनेक्टिंग स्टेटमेंट, नो। यही कह रहे हो ना आप? यस सर, यस सर। हाँ, तो वो सही पॉइंट इज कि दी डायनेमिक्स ऑफ द यूपीएससी हैज चेंज्ड। अब पहले ऐसे देते थे वो क्योंकि कंटेंट ज्यादा नहीं रहता था, बट अभी द प्रेफरेंस दैट वी आर गिविंग इज टू द मैक्सिमम डायमेंशंस इन द मेन बॉडी। तो हेडिंग्स को वगैरह हम ज्यादा इतने पॉइंट वहां पे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यू कैन गिव इट, दैट इज ऑल्सो फाइन अप्रोच। ओके, थैंक ठीक है, बस आफ्टर दैट यू कैन कंक्लूड। अगर इफ यू सी दी मॉडल आंसर ऑफ दिस, कि introduction again I have used with that the world order is in flux. In this context, India is shaping to be the trusted partner in turbulent world. Yes, Jai Shankar. Again, a quote-based introduction. Then China's dominance, political. The points are same जो हमने पहला वाला आंसर लिखा है कि अल्टरनेटिव गवर्नेंस डेवलपमेंट मॉडल ऑफ authoritative capitalism, strategic assertion in South China, Taiwan Straits, Indian Ocean through boiling frog strategy, dual use infrastructure। ठीक है, अब इतना आपको नहीं लिखना है। सिंपली हाउ विल यू राइट दिस इज, if you give the introduction, you will simply write, this is your question, authoritative capitalism model। ठीक है, that then boiling frog strategy and wolf warrior diplomacy in Indo-Pacific। Third, uh, dual use infrastructure and Bobar, Djibouti, and then parallel institutions, example AIIB, SC। ठीक है, इकोनॉमिक weaponization of supply chains, example ban on
critical mineral export, complex interdependence, 18% of world GDP, debt trap, diplomacy, through BRI, technological rivalry, in 5G, AI, etc. ठीक है, इतने ऐसे यू विल राइट, तब जाके आपका around 1/2 of the first page will be written, and then you will come to the second part. कि India's emerging role या फिर West fostering India as an alternative. अब मैंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है, अगर आपने क्लासिफाई नहीं किया, सिंपली पॉइंट्स लिखे तो भी चलेगा. तो China+1 स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि ग्लोबल फर्म्स शिफ्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया, China+1 स्ट्रेटेजी इसके नीचे, और इसके आगे ऐसे 3 पॉइंट्स लिखो, ठीक है. रिसेंट FTA विथ UK, PLI scheme attracting FDI. Third, Apple shifting or Apple Samsung shifting manufacturing to India. So that, ठीक है. Then resilient supply chain initiative to reduce dependence on China. ठीक है. Then India US ICT initiative, cooperation in semiconductor, AI, quantum computing. ठीक है. Then EU India Trade and Technology Council for technology, green energy and digital infrastructure collaboration. ठीक है. अब ये 4 में से आप लिखो, 3 ही लिखो, ठीक है. स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, इंडिया इज सेंट्रल टू US and EU's इंडो पैसिफिक विजन, ठीक है. देन पार्टिसिपेशन इन क्वाड, देन इंक्रीजिंग डिफेंस ट्रेड एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी अंडर कॉमकासा, बेका, लिमोआ, ठीक है, और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स विथ जापान. देन क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप to counter China's monopoly in rare earth minerals. ठीक है, इतना सफिशियंट है. देन मल्टीलैटरल की एशियन कंट्रीज, Central Asian republics and Russia support India's role in ASEAN and SCO as counterbalance to China. इतने पॉइंट्स आप लिखो, ठीक है, इसमें. And then conclusion, as the center of gravity of world politics is shifting towards Indo-Pacific, India's role is going to be critical in shaping 21st century great power dynamics. या फिर the term that you can use, कि as center of gravity of world politics is shifting towards Indo-Pacific, India can emerge as swing state. Yeah, this is C. Rajamohan. ठीक है. Who knows the concept of swing state? किसी को पता है swing state? Yes, so swing state basically means it maintains the balance of power. ठीक है, कि suppose
On one side, there is EU, USA, ठीक है, ASEAN, etc. Second side, Russia, Iran, China, ठीक है. So there is the power game between these two. Okay, so balance of power was best explained through the Europe politics during the interwar period, but or during the entire before World War II. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि इफ आइडियल स्विंग स्टेट इज कि अगर इनका पावर ज्यादा हो गया तो इंडिया विल गो विद देम, सो दैट जो पावर इम्बैलेंस था दैट विल बी बैलेंस. अगर इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो गया, इंडिया विल गो विद देम. सो द रोल ऑफ बैलेंसर इज टू मेंटेन द बैलेंस. और जब दोनों का पावर इक्वल होता है देन दे बोथ नो दैट वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि दोनों भी मरेंगे. ठीक है, व्हेन समवन परसीव्स कि अभी ये वीक है, ठीक है, तभी वो उस पर अटैक करेंगे. व्हेन दे नो कि अदर वन इज आल्सो पावरफुल और हैज द इक्वल पावर, दे वोंट डेयर टू अटैक दैट अदर वन. ठीक है, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे अटैक कर देता है, ठीक है, बट गालवान के बाद चाइना के साथ कुछ नहीं किया, ये उनको पता है क्या होगा. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. ठीक है, वहां पे ही ये स्विंग स्टेट होता है. दैट रोल वॉज प्लेड इन यूरोप बाय यूके. जहां पे भी जैसे वो दो ब्लॉक्स थे, अलाइड एंड एक्सिस, ठीक है, तो जिनका पावर कम होता था यू यूके उसके साइड चले जाता था, सो दैट वो पावर बैलेंस होता था. सो फ्रॉम 1815 टू 1914 तक, 100 ईयर तक यूके प्लेड द रोल ऑफ स्विंग स्टेट, और उसकी वजह से वॉर नहीं हुआ. अल्टीमेटली 1914 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो गया. ठीक है, so, बस इतना याद रखो, इंडिया कैन इमर्ज एज द आइडियल स्विंग स्टेट, दैट कैन बी योर कंक्लूजन. ठीक है, सो ये लिखने की जरूरत, इट इज द नेक्स्ट वन. ठीक है, should you want to write this answer? You write this answer please in quickly in 7 minutes. जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए वही लिखो. यहाँ पे आपका हेडिंग वेस्ट फॉस्टरिंग इंडिया एज द अल्टरनेटिव, इसके नीचे डोंट क्लासिफाई द पॉइंट्स, डायरेक्टली पॉइंट्स लिखो. ठीक है, यहाँ पे दोनों मिला के आपके यहाँ यू राइट जस्ट 2 पॉइंट्स, या फिर जो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाला है यू ड्रॉ द एग्जैक्ट सेम डायग्राम दिस. ठीक है, एंड द सेकंड उसके बाद वो वाले पॉइंट्स. ठीक है, okay, you start writing. You have 7 minutes. Right till 5:35. So after the introduction, you draw this diagram. Those who haven't, जितने भी हुए हैं, write the conclusion. Yeah. Next question is again on the similar theme, which was in 2025. With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. Discuss, elucidate. Yes. Who wants to give me the structure for this? Yes, Sundara. Good evening, sir. Yes, good evening. So we can start with the context that the globalization, the context of globalization, or we can rephrase the statement as well in the introduction, and then we can make a heading, waning of globalization.
and we can make some points under it, and then after that we can state rising of sovereign What will be nationalism, the first heading? the waning of globalization, and then the next heading we can state that the world is becoming a site of sovereign nationalism. And then we can give a counterpoint that globalization has not been waned fully. Like there are still trends in globalization. So No need. ठीक है. Already we have two headings. ठीक है. So ज्यादा मतलब उसमें काउंटर आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है. वेनिंग ग्लोबलाइजेशन एंड हुआ है क्या नहीं बोला है उन्होंने. yes, sir. वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन बोला है. दैट मीन्स कि इट इज द डिक्लाइन ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. So definitely there is a decline in globalization. So you can't give the counter argument to this. But Okay, sir, it's a fact. there are some instances like climate change and other issues. Again, you can see the protectionism and nationalism in climate change also. Even Yes. the US withdrawal from the Paris Agreement. Okay, then there, even in the existential threats like climate change, there is a north-south divide. Even in that context, they are not working in a collaborative manner. No? Okay, sir. Okay. Oh, So so we need not give any argument and contradiction. counter argument won't come there. Okay. Okay, because it's a fact. You can't give the counter argument to this. There is a definite winning of the globalization. Present Yes. world order is defined by, or the trend is defined as the deglobalization. Okay. Rather than that, what you can do, you can conclude with the way forward for India. Okay. Again, strategic autonomy, issue-based partnership, leadership of the global south, then strengthening or the Atmanirbhar Bharat in sectors like defense, energy. वो 3 points आप लिख सकते हैं and then you can conclude. ठीक है. इसका counter argument नहीं आएगा. Because globalization is winning. Yes. अब यहाँ पे one is either you can give the context in terms of the world is witnessing deglobalization, या फिर अब globalization is the recurrent theme. So I'm giving you one definition of the globalization. वो आपको रट्टा लगा के रखनी है. ठीक है. या फिर you can start with the definition of globalization and one plus then context. या फिर क्वेश्चन को रिफ्रेज करो. Then waning of globalization. So जैसे again globalization is majorly economic. ठीक है. Then political, social and cultural phenomena. Even technological also. So in all those terms, how it is waning, that you have to highlight first in terms of economic, rising protectionism. Sorry. ठीक है, वही हमें बेसिकली वहां पे बताना है. ठीक है. सो यहाँ पे आप बता सकते हो डिक्लाइनिंग ग्लोबल ट्रेड. सेकंड की डेडलॉक इन WTO. ठीक है. This then in terms of technology also you can see nationalism, right? Nationalism कैसे की example ban on Huawei. US में Huawei 5G पे बैन है. या फिर वही लिख दो क्रिटिकल मिनरल का, चाइना बैनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल. ठीक है. देन इकोनॉमिक नहीं बट पॉलिटिकल टर्म्स में यू कैन टॉक अबाउट UN facing crisis of confidence, right? That then the trend is regionalism
replacing globalization. ठीक है, इसका एग्जाम्पल इज यू कैन गिव द ACR. Sir, can friend-shoring and near-shoring be taken as example for waning and globalization? Friend-shoring, near-shoring policies also Okay. यहाँ पे इकोनॉमिक्स में, ठीक है, वो देन राइज ऑफ सोवरिन सोवरिन नेशनलिज्म, ठीक है, यहाँ पे भी सोवरिन नेशनलिज्म इन पॉलिटिकल स्पीयर. तो पॉलिटिकल स्पीयर में हाउ नेशनलिज्म इज or the rise of sovereign nationalism, it can be seen in Europe. You have rise of neo-fascist parties. And not citizenship, but visa policy of the US. Example, you can give Le Pen of France. Okay, या फिर in Hungary they form the government. Then in USA, the MAGA campaign, Make America Great Again. ठीक है, ठीक है, इतना sufficient in terms of economics. The this in the EU's या फिर India's, you can give the example of अभी हमने जो किए थे, which was that policy, what was that scheme, PLN. PLI scheme, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, in terms of technology, EU GDPR, right, then USA's tariff war, ठीक है, and economic nationalism. Again, for example, you can give Trump threatening Apple CEO. To not manufacture in India. किया था ना publicly, ठीक है, so that you can write as the points. Then technology GDPR, this highlights digital sovereignty. So strict rules on the data localization, ठीक है. Then political में you can also give the example of Brexit. ठीक है, this then uh, in terms of the defense and security, okay, keep the rise of territorial nationalism, which can be seen in Russia-Ukraine war. ठीक है, second, with respect to the security nationalism, example, Iran's nuclear program. Yes, what else? Hmm. Hmm. Increasing expenditure on defense equipment, that also you can write. Yes, ठीक है. मल्टीलैटरलिज्म का तो हमने यही पे लिख दिया, बट देर आर फ्यू मोर ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल ओनली. वन मोर इज द राइजिंग एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट. इसका एग्जाम्पल इन हंगेरी. Yes, what else?
There was one with respect to the health. You also must have read it. Vaccine nationalism during the time of COVID, right? कि where Yes. they stockpile their own vaccines. हम बस दे रहे थे, ठीक है, बाकी लोग वैक्सीन नेशनलिज्म कर रहे थे, हम वैक्सीन मैत्री कर रहे थे, ठीक है. सो वैक्सीन nationalism during COVID pandemic. Yes. What else? Again, ये अब all over world, if you see the leaders who support the nationalism, ठीक है, they are in power, right? ट्रम्प हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, यूरोप में बढ़ रहे हैं. So what is the reason behind that? Because of the public opposition to the globalization. There's a public perception against globalization and support for this nationalist policies. Okay, this was done by ठीक है. दिस मल्टीलैटरलिज्म में भी अगर आपको लिखना है, यूएस कमिंग आउट ऑफ दिस पेरिस क्लाइमेट डील, और किससे बाहर आ गया है वो, क्योंकि डब्ल्यूटीओ तो हमने ऊपर लिख दिया है, एक तो यूएस कमिंग आउट ऑफ पेरिस क्लाइमेट डील, सेकंड And dialogue with Iran on nuclear deal. हाँ, डायलॉग विद ईरान, ठीक है. यस. हाँ, यूएसए ब्लॉकिंग और स्टॉप्ड डब्ल्यूएचओ फंडिंग. ठीक है, इतने पॉइंट्स आपके सफिशिएंट है. ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बस है ना 12, आपको 12 लिखने भी नहीं है. इसके बाद ब्रीफली यू कैन कंबाइन दी कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड. ठीक है. सो फॉर इंडिया, strategic atop on this great power ambition, it needs, या फिर as world order is in flux, India needs, ऐसे करके एक issue based partnerships. जयशंकर, self reliance example, expanding PLI. ठीक है. अब ग्लोबलाइजेशन आपका डिक्लाइन हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि वेयर यू हैव द ग्रुप्स, वेयर यू हैव द ऑर्गेनाइजेशंस. So organizations etc are declining. So when organizations are declining, you need to strengthen bilateral relations with global. ये और क्या लिख सकते हो?
एक ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली इकोनॉमिक, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स. Sir, can we also state the leader of Global South and great power ambition? लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ ऑल्सो यू कैन राइट, यस. वो भी एक पॉइंट है. 4 ही लिखने हैं आपको. लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ इन WTO and UNF. One doubt, sir, in the above heading, we have written waning of globalization. So, उसमें ये point ठीक रहेगा क्या कि shift from multilateralism to bilateral free trade agreements? वो तो लिखा तो है हमने कि रीजनलिज्म रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन. Okay. So, उसमें वो bilateral FTAs जो होते हैं वो भी एक बायलैटरल तरीके भी, से उसी का ही एग्जाम्पल हुआ. वो भी लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ पे लिखा है ना. Yes. नहीं, वो इसमें नहीं है. ठीक है, ये वाला आंसर क्लियर. Yes. Thank you. रिफॉर्म ऑफ, यस, रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, रविंद्रनाथ टैगोर इन कंक्लूजन, यस यू कैन मेंशन. ठीक है, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, यस, दैट आल्सो यू कैन मेंशन. So do you want to write this answer? I don't think, क्योंकि ये अभी इस साल का ही है. But remember just, or at least just note down the definition of globalization. Okay, this answer I will put in the group. Thomas Friedman, in his book Lexus and Olive Tree, a very good book. He was the neoliberal scholar, one who developed the Washington Consensus also. Okay, defines globalization as inexorable integration of markets, nation states, technologies, making it faster, further, faster, deeper and cheaper. रट्टा लगा लो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आपको GS1 में भी ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, GS2 में भी आएगा, इथिक्स में भी इट कैन कम, और इन essay if you are highlighting the globalization dimension there also you can use this. ये पूरा का पूरा नहीं, as per Thomas Friedman bracket में Lexus and Olive Tree, it is inexorable integration making world farther, faster, deeper and cheaper. ठीक है उतना. However, at present world is witnessing deglobalization. क्या बाकी हमारे वही पॉइंट्स. ठीक है, ये लिखने की जरूरत है. डू यू वांट टू राइट? यस. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. नो नीड, राइट? यस. ठीक है, so बिकॉज आराम से आपके पॉइंट्स इसमें बन जाएंगे. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑन दी डायस्पोरा. सो डायस्पोरा के अभी तक आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं. नेक्स्ट ईयर ऑल्सो द डायस्पोरा क्वेश्चन कैन कम, because the last question was in, I think, 2020 and then in 2023. Okay, so next year also it can come, because जो अभी पिटाई हुई है डोनाल्ड ट्रम्प से because of the strained India US relations. ठीक है, it was majorly because of the failure of India's lobbying. ठीक है, what happened was Pakistan hired a lobbying firm in the US. ठीक है, so they talked with, or they had the access to the Donald Trump, so they were able to put their view. ठीक है, सेकेंडली उन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक कंपनी डाली है ऑन द क्रिप्टो करेंसी, सो दे ब्रॉड द क्रिप्टो करेंसी फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प्स कंपनी. उसको अराउंड 300 मिलियन का उन्होंने प्रॉफिट करा के दिया. ठीक है, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रम्प इज साइडिंग विथ दिस पाकिस्तान देन इंडिया. ठीक है, कतार ने तो उनको एक बोइंग जेट गिफ्ट कर दिया है. सो
ऐसे चल रहा है, बट इंडिया लैग बिहाइंड क्योंकि हम विश्व गुरु है, तो उसकी वजह से फिर वो हो गया। दिस वाज इन न्यूज, the downturn in the India-US relations is also the failure of diaspora. So next year again you can give the question on this. ठीक है, diaspora चांसेस कम है पर आ सकता है। अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू देयर रोल, अगर यहाँ पे देखोगे तो इंडियन डायस्पोरा हैज थोड़ा सा बस स्ट्रक्चर चेंज होगा, अदरवाइज कंटेंट विल रिमेन द सेम। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर में दे दूं, so introduction, you can either go with the data-based introduction. India has the 30 million diaspora across the world. या फिर आप मोदी जी का कोट यूज कर सकते हो कि डायस्पोरा इज इंडियाज ग्लोबल एम्बेसिडर्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। देन विथ रिस्पेक्ट टू देयर रोल, ठीक है, फर्स्ट, yes, it is from the perspective of the politics. So basically they are the representation, जैसे कमला हैरिस और ऋषि सनक। ठीक है, सेकंड, दे लॉबी फॉर इंडिया। ठीक है, थर्ड, सॉरी, सेकंड पॉइंट is majorly economics, specifically remittances. Second, investment in India. Third, with respect to the this technology, the example, the investment in the Indian startups. Yes, civil nuclear deal was the result of lobbying. Okay. Fourth, in terms of the philanthropy, या फिर उसी को कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो इसमें फंडिंग फॉर CSOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। सेकंड, नॉलेज ट्रांसफर। ये इनका रोल होता है। ठीक है, वन मोर, इफ यू वांट, the promotion of India's soft power। ठीक है, मतलब दिवाली सेलिब्रेशन, योगा सेलिब्रेशन, इन दोज वर्ड्स, राइट, डूड्स। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स आएंगे, एंड इन्हीं के बेसिस पे यू हैव टू जनरेट दी पॉइंट्स। ये क्लियर है? Okay. Now if you see the model also, what I have done is I have started with the data. ठीक है, so I have written this answer. अब इसी को रिफ्रेश, यहाँ पे भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल बेनिफिट्स ही पूछा है, एंड हैव स्केल न्यू हाइट्स इन वेस्ट। तो इंट्रोडक्शन के बाद बस उनके एग्जांपल देने हैं कि हाउ दे हैव स्केल न्यू हाइट इन वेस्ट, देन इकोनॉमिक पॉलिटिकल बेनिफिट विल रिमेन दी सेम। ठीक है, यहाँ over 32 million person of Indian origin and NRIs spread across 200 countries. Indian diaspora has become one of the most influential transnational communities in the world. Just remember this word, transnational communities. Because the other aspect is transnational organizations. जैसे आपके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस WTO वगैरह होते हैं, या फिर ग्लोबल NGOs, ग्रीन पीस जैसे।
They are transnational organizations. These are transnational communities. Okay. So economic benefits, remittances. Okay. So the remittances strengthen foreign exchange reserves and domestic consumption. So in 2024-25, India received 135 billion of the remittances. Okay. Next, investment in Indian startups, real estate, venture capital. Example, Silicon Valley, Bangalore corridor. Next, trade and business networks. So bridge for exports and market access. Yeah, so market access to the Western countries. So then diaspora network and initiatives like Pratham, Akshay Patra, IIT Alumni Foundation, channel philanthropy to education and health. So itna लिख दो philanthropic and social entrepreneurship in sectors like health, education, etc. Example, Akshay Patra receiving the NRI funding. This simple इसमें आप लिख सकते हो. Okay, that's fine. Then knowledge transfer. ठीक है. And R&D collaboration and technological innovations in India. Then university collaboration, diaspora academics help forge institutional ties. या फिर यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन एंड टाइप्स. एग्जांपल, इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम. So in terms of, and then last, we criticize it as the brain drain, but the opposite of is the brain circulation. Okay, reverse migration of skilled professional enhances India's innovation capacity. ठीक है, शाहरुख खान इन स्वदेश, that is the brain circulation. ठीक है. रियल उसका एग्जाम्पल कोई है नहीं, नहीं आता है जनरली कोई, बट आप पॉइंट लिखो. ठीक है. ब्रेन सर्कुलेशन, रिवर्स माइग्रेशन enhances India's innovation capacity. And then political benefits, lobbying and advocacy for India-friendly trade, defense and immigration policies. Example, role in Indo-US nuclear deal. Okay, so they played very decisive role. Then soft power promotion through festivals, yoga days, cultural events. Example, Diwali celebration in हाँ कनिष्क कटारिया, बट इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है उनका. ठीक है. वहां यहाँ के उल्टा आईएएस बने. कंट्रीब्यूशन आपको वैसे बताना है, दैट टू एट दी रिसेंट वन. नो. सो सॉफ्ट पावर प्रमोशन, दिवाली सेलिब्रेशन इन व्हाइट हाउस, या फिर गरबा सेलिब्रेशन, कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है. देन रिप्रेजेंटेशन इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. एग्जाम्पल, गीता गोपीनाथ एज चीफ इकोनॉमिस्ट IMF, या फिर अभी अजय बंगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. नो. देन strengthening the bilateral relations. Example, Kamala Harris and Rishi Sunak strengthen India, US and India, UK bilateral relations. The next, countering anti-India narratives and misinformation on issues like Kashmir, CAA, farmers protest. Yeah, challenges. One is the security threats, the Khalistani groups in China. Then issue of discrimination and racism. And third, brain drain concerns. ठीक है. अब इतने आपके यहाँ पे पॉइंट्स आ गए तो यू डोंट हैव द स्कोप फॉर वे फॉरवर्ड. ठीक है. सो आपका कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड आएगा. thus as PM Modi noted, Indian diaspora is global ambassador of talent, trust and transformation. Thus sustained institutional dialogue is essential. ये आपका वे फॉरवर्ड हो गया. ठीक है.
टैलेंट, ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ भी डाल दो टी से लेके, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट लिख दो। ठीक है, वैसे इन दिस चैलेंजेस आपका डायग्राम के थ्रू आएगा। इन दोनों में आपके 5 ईयर 10 पॉइंट्स, दिस 13 यहाँ पे 3 4। ठीक है, तो इन दोनों का ये एक ही आंसर लिखो। डायस्पोरा पे कोई क्वेश्चन आए भी तो भी तो यही लिखना, ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू राइट दिस आंसर, राइट इट इन 7 मिनट्स। थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिखो, डोंट गिव द सब हेडिंग, राइट द फुल सेंटेंसेस। ठीक है, फुल सेंटेंस करके लिखो, डोंट गिव द सब हेडिंग। यस, इसमें इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस वाला पॉइंट। So in 7 minutes, because after that we'll shift to the organizations. Finish it till 6:16. Give me the confirmation when it's done. Right. Finish it because we have to shift to the organizations. उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यस रोहित। Hello, I'm audible, sir. यस। Sir, in the diaspora first questions, हम्म the can you please little up, scroll up little bit? हम्म Sir, in that questions, question is asking about the Indian diaspora has a decisive role to play in the politics and economy of the American and European countries. हम्म Sir, the point of remittances in economic benefits, is it okay to write in the first question? नॉट बेनिफिट्स बट इन इकोनॉमी, इसके थोड़े से पॉलिटिक्स में तो ये पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे। Hmm. दी इकोनॉमी में आपके थोड़े से कि जो जैसे विथ रिस्पेक्ट टू दी ये वाला आएगा। ठीक है, माइग्रेशन वाला एक पॉइंट आएगा। ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल सुंदर पिचाई या फिर आपके सत्या नडेला, दोज विथ रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप, सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द एंटरप्रेन्योरशिप, Hmm. थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्टार्टअप्स। ठीक है, इसको बस आपको रिफ्रेश करना होगा। यहाँ पे वी आर हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स फॉर इंडिया, उसको Yes. जस्ट हैव टू रिसर्कुलेट इट। और ये करना होगा आपको Sir, कि in terms of technology, manpower, what was यस, the contribution of Indians in the economy वेस्टर्न of एंड America? अमेरिकन, यस, Okay. वैसे उसका स्ट्रक्चर है। आई विल गिव यू द मॉडल आंसर ऑफ दैट आल्सो, डोंट वरी। ठीक है, ये हो गया। यस, अंशिका। Hello, sir. हम्म Sir, in according to this first question, sir, आप थोड़ा स्क्रीन नीचे करो। हम्म सर, उसमें तो ये पूछा है कि इंडियन डायस्पोरा प्ले रोल इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। भी वही, उनका भी वही डाउट था। तो ये यस सर। इंडिया स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं आएंगे, देयर कंट्रीब्यूशन इन होस्ट कंट्री के पॉइंट्स है। सर, ठीक है, it this answer is relevant for 2023 question. 23 का। Yes sir. उसका भी मॉडल आंसर आई विल गिव यू। Okay, thank you sir. सिमिलर लाइंस पे ही होगा, थोड़ा आर्टिकुलेशन डिफरेंट होगा बस। ओके, इज दिस आंसर कंप्लीट फॉर एवरीवन? ओके, नाउ the global organizations and global groupings। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो हमने किए हैं, बट ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोब एग्रीमेंट्स रिलेटेड
या फिर ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये हमने नहीं किया। ठीक है, दिस इज न्यू। बाकी एससीओ वाले वगैरह तो वो तो हमने ऑलरेडी किया है, इसमें फिर से करेंगे। इसमें अगर इंस्टीट्यूशंस देखोगे कि जैसे WTO दे हैव आस्क्ड, देन यूनेस्को दे हैव आस्क्ड, WHO, this was current affairs specific question they have asked, COD they have asked, SCO, this is again current affairs based, Australia, UK, US, of course, then BIMSTEC as a parallel to SARC, I2U2, and then with respect to the India's environmental या फिर climate diplomacy, ठीक है, ये again SCO, then with respect to NATO, and last year, sorry, with respect to International Maritime Organization, and with respect to the UNSC. ठीक है, and this year they asked again with respect to the UN. ठीक है, अब इनमें से ये यूनेस्को WHO वाले तो क्वेश्चंस आपको फिर से नहीं आएंगे, स्किप, दैट इज फाइन। बट सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो करने हैं, दैट इज WTO क्वेश्चन कैन अगेन कम, UN स्पेसिफिकली UNSC। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट कि IMF you have to do next year, you can get a question on the IMF, ठीक है, and World Bank। Second regional level पे you can get a question on NDB and Asia Infrastructure Investment Bank। ठीक है, इन सारों के बस मैंडेट भी आपने अगर कवर कर लिया तो भी सफिशियंट है, और बाकी फिर आपके सारे करंट अफेयर्स बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे। I2U2 ऑफकोर्स ये फिर से रिपीट नहीं होने वाले हैं। ठीक है, सो एक्सेप्ट फॉर दीज, जो भी सार्क इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, अगेन बिम्स्टेक एंड सार्क कैन अगेन कम। ठीक है, बट ये वाले आपको अच्छे से करने हैं। इसके बियॉन्ड यूनेस्को, I2U2, ये वाले यू कैन स्किप। ठीक है, एससीओ तो अगेन एससीओ तो हमें करना ही है, कल भी हमने किया है एससीओ। ठीक है, बट इसके मॉडल आंसर्स हम जितने करेंगे उतने सफिशियंट है। यूनेस्को फिर से नहीं पूछेंगे इवन इफ इट इज इन न्यूज। ठीक है, कोई बड़ा न्यूज उसमें नहीं होने वाला है। यूनेस्को आई डोंट थिंक दे विल आस्क अगेन। ठीक है, इसमें बस इतना याद रखो कि व्हाइल हाईलाइटिंग द इश्यूज, जो फ्रेमवर्क हमने हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज को यूज किया था, द इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द मैंडेट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू द वैकेंसीज। ठीक है, जैसे WTO में US हैज नॉट अलाउड, ब्रिक्स भी फिर से आ सकते हैं। ब्रिक्स तो मैंने कल भी कहा है आपको आएगा। तो with respect to the WTO, US has not appointed the members in dispute settlement body. Okay. Second aspect of it is the dominance of Western bureaucracy. ठीक है, so dominance of Western bureaucracy in UN, IMF, World Bank, तीनों में। So it is the rule that World Bank president has to be a US citizen. अभी तक के जितने वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट हो गए दे आर ऑल US सिटीजन्स। ठीक है, IMF के फिर भी थोड़े थोड़े यूरोप के भी आ गए।
ठीक है, बट वर्ल्ड बैंक के सारे वही है। ठीक है, थर्ड, नॉर्थ साउथ डिवाइड। ठीक है, फोर्थ, इट इज पैरेलल organizations. Okay, so for WTO you have the regional free trade agreements like RCEP, which has the overlapping mandate. Okay, for IMF the currency swap agreements under BRICS, और इंडिया श्रीलंका ने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था। ठीक है, फॉर वर्ल्ड बैंक यू हैव न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सो दे overlapping functions. ठीक है, तो ये आपके कॉमन पॉइंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे। ठीक है, यूएनओ डब्ल्यू जो यूएस लेड मॉडल में है। ठीक है, यूएस लेड जो है उसमें वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ में। ठीक है, इवन इन यूएन में भी ये पॉइंट आ सकते। ठीक है, ये क्लियर है, बाकी फिर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक ही रहेंगे। ओके, सो फर्स्ट डब्ल्यूटीओ अगेन, बहुत टाइम हो गया है डब्ल्यूटीओ को क्वेश्चन पूछ के। आफ्टर 2018 दे हैवंट आस्क्ड, सो नेक्स्ट ईयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑन द क्वेश्चन ऑन द डब्ल्यूटीओ। ठीक है, सो आज हम जो कर रहे हैं वो अच्छे से ध्यान दे दो। ठीक है, सो व्हाट आर दी key areas of reform if WTO has to survive in the present context of trade war, especially keeping in mind the interest of India? क्वेश्चन छोटा है बट ये 15 मार्कर है। So you have to fill the 3 pages. So how would you structure this particular answer? Again, focus upon the keywords. Who wants to try? Yes, Rohit. Yes, sir. So the question asking about the WTO survival strategy. So in the first introduction part, I would like to put significance of WTO, then challenges, and then my core answer will start about reforms. Okay. So in the introduction part, as I said, the significance of WTO, then after the challenges, and then after the key areas of reform. And here are not asking about the challenges. I would not say that can't be put, but after putting some key reforms, I would say that benefits that India get after these reforms, and then conclusion. बेनिफिट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपने रिफॉर्म लिख दिए तो दैट इज द वे फॉरवर्ड ओनली। ठीक है, देन यू गिव द कंक्लूजन। फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन दी, अब ये सही है, दिस इज गोइंग टू बी योर स्ट्रक्चर ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चन। जो हम पॉलिसी या फिर गवर्नमेंट स्कीम या लॉ का इंट्रोडक्शन हम देते हैं, इट्स ओरिजिन प्लस ऑब्जेक्टिव। Sir, the significance can't be there. Is significance and objective are more and less similar? Okay. ठीक है, that again objective and importance again वो भी more and less similar ही रहेगा। ठीक है, प्लस अगर इसमें पॉसिबल होगा तो मेंबरशिप। ठीक है, अब इसमें तो देने की जरूरत नहीं है बट आई एम से देन अगर क्वेश्चन के बेसिस पे रीफ्रेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट, if in case of the WTO after the introduction you provide its organizational chart, जो आप ग्राफ निकाल के दोगे। ठीक है, देन अब यहाँ पे in context of trade war, so basically the challenges to the WTO, उसमें अगेन पहला पॉइंट आपका आप ट्रेड वॉर का दे दो, उसके बाद उसके चैलेंजेस। नाउ
स्पेसिफिकली अब इसके बस आई विल एक्सप्लेन द मॉडल आंसर, based upon that you'll get the conceptual clarity with respect to the WTO. ठीक है, so the introduction, the WTO established in 1995 under Uruguay round of general agreement on trade, was designed to promote rule-based multilateral trade and ensure that trade flows smoothly, predictably and freely. ठीक है, तो अब ऑब्जेक्टिव का हो, सिग्निफिकेंस का हो, या फिर उसका क्या इंपॉर्टेंस का हो. ठीक है, so objective is also rule based multilateral trade, significance is also rule based multilateral trade, importance is also rule based multilateral trade. ठीक है, all three are same. बस WTO के कंटेक्स्ट में ये 3 वर्ड याद रखो, SPF, स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड फ्रीली. ये WTO के ऑब्जेक्टिव WTO के वेबसाइट पे ही दिया है. ठीक है, डिजाइन टू प्रमोट रूल बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड एंड इंश्योर ग्लोबल ट्रेड फ्लोज स्मूथली, प्रेडिक्टेबली, फ्रीली. ठीक है, आफ्टर दैट यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ WTO. So ministerial conference, under that you have the general council, उसके 2 पार्ट है, ट्रेड सेटलमेंट बॉडी एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. ठीक है, देन यू हैव गुड्स काउंसिल, IPR काउंसिल एंड सर्विस काउंसिल. तो ये आपके 3 जो WTO के एग्रीमेंट्स है. ठीक है, सो दिस इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड in goods. This is TRIPS with respect to the IPR, and this is with respect to trade in services. General agreement on trade in services gets. Okay, ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखो जस्ट फॉर द कंसेप्चुअल क्लियरिटी. ये आपका diagrammatic representation after the introduction should come in case of the WTO. अगर क्वेश्चन 15 मार्कर है तो 10 मार्कर में मत दो. देन मेजर चैलेंजेस. अब यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला है कि फर्स्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेड वॉर, पहला ट्रेड वॉर्स एंड प्रोटेक्शनिज्म, एग्जांपल ट्रम्प टैरिफ एंड मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. सेकंड, since 2019 dispute settlement system has been defunct due to US blocking judges appointment. because ये जो dispute settlement body है, because उसमें judges ही नहीं, because US has blocked it. वो next, deadlock in Doha development agenda and agreement on agriculture. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो basically under WTO in 2001 they launched the Doha development agenda. अगर इसका बैकग्राउंड आपको समझना है तो in 2001 there was unipolarity. ठीक है, it was the US led model and US wanted all the developing countries to join WTO and to follow the liberal this trade, and for that they gave the carrot in terms of the Doha development agenda. So it was in favor of the developing countries. जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंडर दे गिव द कंसेशंस with respect to the the public stock holdings. Then they talked about the most favored nation status, okay, or the concessions to the developed and least developing countries. But so because of that, all the developing and least developed countries joined WTO. And उसके बाद उन्होंने क्या किया कि दे स्टॉप्ड दी, या फिर उसका वो एग्रीमेंट फाइनलाइजेशन ही नहीं हुआ. जैसे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड, सो वो तब से निगोशिएशंस ही कर रहे हैं, बिकॉज all the decisions in the WTO are taken by consensus.
वो मेजोरिटी से डिसीजंस नहीं होते हैं. Until and unless there is complete consensus among the members, WTO decisions cannot be taken. उसकी वजह से वो अटका है. और इसको डाइल्यूट करने के लिए व्हाट दे हैव ब्रॉट इज द न्यू इश्यूज, जो हमने कल पॉइंट लिखा था. सो नाउ डेवलप्ड कंट्रीज आर टॉकिंग अबाउट न्यू इश्यूज कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज या फिर लेबर प्रोटेक्शन. They are talking about bringing these new issues in the negotiations. But developing country उनका कहना है कि पहले इसको फाइनल कर दो तभी इसको लेंगे. So that has created the North versus South debate. ठीक है, इतना समझ आया. What is the major issue in WTO? इतना ही आपको पता होने की जरूरत है, इसके बियॉन्ड नहीं पता हो तो भी चलेगा. ठीक है, इतना समझो बस. Now, so deadlock over Doha Development Agenda and agreement on agriculture. Next, opposition of developing countries for new issues. इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एनवायरमेंटल एंड लेबर इश्यूज और डेटा गवर्नेंस इश्यूज. ठीक है, वो देन बिकॉज ऑफ दैट WTO रूल्स लैग बिहाइंड इन डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स. उनके कोई रूल्स है ही नहीं. ठीक है, क्योंकि DDA ही अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो न्यू इश्यूज तो दूर रहा. देन डिस्प्यूट्स ओवर डेवलपिंग कंट्री स्टेटस. तो जैसे मैंने कहा कि इनिशियली USA गेव द कैरेट टू द कंट्रीज के अंडर विच इट एग्रीड कि द कंट्रीज कैन सेल्फ डिक्लेयर देमसेल्फ एज द डेवलपिंग कंट्री. एज पर WTO चाइना इज स्टिल डेवलपिंग कंट्री. तो डेवलपिंग कंट्री होने के स्टेटस की वजह से चाइना को स्टिल दे गेट दी कंसेंसस. ठीक है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज से कंसेंसस मिलते हैं वो स्टिल चाइना इज गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ देम. तो दिस डिस्प्यूट्स ओवर डेवलपिंग कंट्री स्टेटस. ठीक है, कि वेयर इट इज सेल्फ डिक्लेयर्ड. सो US का भी कहना है कि इंडिया एंड चाइना शुड बी ट्रीटेड एज डेवलप्ड. Yeah, so that is one more dispute. Then जो मैंने ओवरलैपिंग वाला पॉइंट्स कहा था, where their mandate is or the parallel organizations, mega regional trade pacts like TPP or CEP, ठीक है, bypassing WTO. ठीक है, और overlapping with the WTO mandate, having overlapping mandates. ठीक है, ये आपके मेजर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ WTO. नेक्स्ट, इसके फिर वे फॉरवर्ड. फर्स्ट, रिवाइवल ऑफ dispute settlement system to maintain the credibility and rule based order. Yes, second, with respect to the institutional reforms, to move from consensus only decision making to majority based models for efficiency. Okay, next, voice of developing nations in agenda setting and committee representation. So जैसे हमने ये पॉइंट लिखा था कि dominance of the Western bureaucracy, उसके अपोजिट इन वे फॉरवर्ड रिप्रेजेंटेशन टू द डेवलपिंग कंट्रीज इन एजेंडा सेटिंग एंड ब्यूरोक्रेसी. यही पॉइंट आप लिख सकते हैं. ठीक है, वो देन रिफॉर्म स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में अगेन डोहा डेवलपमेंट एजेंडा में जो भी कंट्री खुद को डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप कंट्री सेल्फ डिक्लेयर करती थी, तो फॉर देम देयर वाज स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. सो बेसिकली जो भी टैरिफ लगता था उसमें उनको कंसेशन मिलता था. ठीक है, जिसकी वजह से विच वाज यूज्ड बाय चाइना. ठीक है, सो दिस
reform special and differential treatment, retain it as the core principle, ensuring policy space for the developing countries. Then agriculture trade. So with respect to the agriculture, agreement on agriculture, ठीक है, ये इंडिया के स्पेसिफिक डिमांड्स क्या है कि फर्स्ट, rationalize domestic support and export subsidies in developed countries. ठीक है, so there are 3 categories of the subsidies, no, or 3 boxes. Green box. What is the second box? Amber box. What is the third? Blue box. ठीक है, इसमें what has allowed is under green box. तो उसमें जो भी सब्सिडी के, जैसे सपोज उसमें अगर ग्रीन बॉक्स में ऐड किया उन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी, तो दैट इज अलाउड. ठीक है, ब्लू बॉक्स की आपकी सब्सिडी अलाउड नहीं है, सो कंट्रीज हैव टू रोल डाउन देयर दोज सब्सिडीज. एंड देन एम्बर बॉक्स में इट हैज बीन पुट एज द लिमिट, ये लिमिटेड अमाउंट में ही दे सकते हो. तो डेवलप कंट्रीज ने क्या गेम किया है कि उनके जो भी सब्सिडीज है, they have put them under the green box. So because of that, उन पे कोई restrictions नहीं है. Second, जो year होता है कि on the basis of which the subsidies are calculated, तो that year they have kept 1985. ठीक है, तो उसमें उस टाइम भी वो जितना सब्सिडी देते थे उतने ही परसेंटेज की सब्सिडी वो अभी भी देते हैं, बिकॉज उतना उनका इकोनॉमी 1985 में जितना था अभी भी उतना ही है. द ग्रोथ रेट ऑफ द यूएसए यूके वगैरह 1% या 1.5% रहता है, बिकॉज वो सेचुरेटेड इकोनॉमीज है. बट डेवलपिंग कंट्रीज की कैपेसिटी अब बढ़ गई है. 1985 में हम जितना दे सकते थे उतना अब नहीं दे सकते, उससे कहीं ज्यादा हम दे सकते हैं. बट उन्होंने वो बेंचमार्क 1985 का रख दिया है, तो बिकॉज ऑफ दैट इंडिया की मेजोरिटी सब्सिडीज कम अंडर दी और ब्रीच एम्बर बॉक्स लिमिट. ठीक है, तो देयर मेजर रिफॉर्म वाज टू चेंज द ईयर, बेस ईयर टू 2001 और 2002. ठीक है, दैट. सो रैशनलाइज डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज इन डेवलप्ड नेशंस फर्स्ट. सेकंड, permanent solution for public food grain stockholding. Basically permanent solution for India's MSP program. And third, ensure food security exemption. So जैसे इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया का जो MSP है, so western countries claim that MSP is breaching your amber box subsidy. So they are saying don't give the MSP to the farmers. इंडिया का कहना है कि MSP India provides for the food security of India, not for the agricultural trade. So हम उससे ट्रेड नहीं करते हैं. That is for India's domestic consumption and for food security. So India is asking for exemption on food security. ठीक है, अंडर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर. तो इसमें फाइनलाइज अभी नहीं हुआ है. इसके अंडर क्या हुआ है, इन बाली पीस प्रोसेस और द बाली मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2013, उसमें क्या हुआ था, उन्होंने पीस क्लॉज इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि 5 साल के लिए ठीक है आप दे दो, उसके बाद विल निगोशिएट अगेन, और फिर उसके बाद आपको कम करना होगा. ठीक है, बट उस वो तो फाइनल हुआ ही नहीं है, तो उसकी वजह से वो पीस क्लॉज कंटिन्यूली वो एक्सटेंड करते रह रहे हैं. इंडिया का कहना है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर यू फाइनलाइज बेस्ड अपॉन दीज 3 वे फॉरवर्ड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज द टैकलिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन. ठीक है, अब जैसे यूरोपियन कंट्रीज या फिर यूएस एक्सेट्रा, दे कांट इम्पोज द डायरेक्ट टैरिफ. ठीक है, ट्रम्प कर सकता है बट बाकी वाले नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हाट दे डू, रादर देन टैरिफ बैरियर्स दे इम्पोज नॉन टैरिफ बैरियर. नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कौन से, कि जो क्वालिटी वाले होते हैं. कि जैसे
they don't allow या फिर they restrict access to India's mangoes or India's food exports to the EU, saying that the fertilizer or the chemical content is very high. Those are the non-tariff barriers. Okay, so India wants to rationalize non-tariff barrier based upon scientific standards and non-discriminatory application. Okay, next, addressing distortions by non-market economies. Okay, so non-market economies majorly China. नॉन मार्केट इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमी कंप्लीटली ओपन नहीं है, तो चाइना डजंट अलाउ फ्री access to its market. So what India wants is the addressing distortions by non-market economies. Example, China's export quotas on rare earth. या फिर रिसेंटली कोटा भी नहीं, इन्होंने एक्सपोर्ट बैन ही कर दिया था. ठीक है. नेक्स्ट, रूल्स ऑन data localization, digital taxation, cross-border flows to prevent dominance of big tech या फिर data colonization. एंड लास्ट, जो एनटीबी है, नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसमें एक तो सेफ्टी या क्वालिटी इश्यूज होता है. सेकंड, ये ग्रीन ट्रेड बैरियर्स दे हैव इंट्रोड्यूस, जैसे फॉर एग्जांपल यूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ठीक है, सो प्रिवेंट मिसयूज ऑफ ग्रीन ट्रेड बैरियर्स एज डिस्गाइज्ड प्रोटेक्शनिज्म. एग्जांपल यूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट, कि आप WTO को, जैसे आपकी ये बॉडी है, ठीक है, दैट हैज बिकम डिफंक्ट. सो व्हाट इंडिया हैज सजेस्टेड इज कि एस्टेब्लिश परमानेंट WTO रिफॉर्म काउंसिल similar to India's interstate council, which will propose systemic reforms every 5 years. ठीक है, कि जैसे आपके अब WTO has lagged behind in the new issues like environmental issue, data, e-governance. So what you do is you establish permanent reform council, which will suggest the reforms periodically every 5 years. Okay, these are the suggestions which are there for reforming WTO. And then in conclusion, again, India must lead Global South coalition to ensure reforms are inclusive, equitable and development centric. ठीक है. अब इस सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स आर बेसिकली नॉन टेरिफ बैरियर्स. इसके एग्जांपल में अब लिख सकते हो सैनिटरी फाइटोसैनिटरी SPS मेजर्स. ठीक है, इसमें हम ये लिख सकते हैं. दिस इज योर. अब इसमें यार कि फ्रेमवर्क एप्लीकेशन इज वेरी लिमिटेड. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 2 to 3 पॉइंट्स. उतने ही आप क्या आएंगे सर, ज्यादा से ज्यादा इसमें आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे नॉर्थ साउथ डिवाइड ओवर दोहा डेवलपमेंट एजेंडा. ठीक है, इतनी. यू राइट दिस आंसर, ऐसे का ऐसे लिखो. ठीक है, और नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन आएगा तो भी इसी रिलेटेड आएगा, आपका आंसर ऐसे का ऐसे ही रहेगा. So you write this answer. Next answer, next question is also very critical on the, we'll do the climate diplomacy. ठीक है, वो GS अगेन 1 2 3 तीनों में आपका उसका कंटेंट यूज होगा. यू राइट दिस वैसे का वैसे लिखो. आई एम गिविंग. यस वसुंधरा. सर इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ट्रेड वॉर्स, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में है. आई थॉट वी हैव टू मेंशन सम इंस्टेंसेस वेयर लाइक ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म, फिर उसके बाद सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस.
देखो, अब वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन बाय चाइना आप लिख सकते हो. I mean, but instead of writing the structure of WTO, should we mention those instances in some diagram? ज्यादा मतलब आएंगे नहीं ना वो, कि जैसे एक तो आपका ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म आएगा, वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन आएगा, उसके बियॉन्ड क्या आएगा? Countervailing taxes, मतलब non-tariff barriers. नॉन टैरिफ बैरियर्स तो हमने मेंशन किया है नीचे, दैट हाँ, विल बी डुप्लीकेशन. okay, sir. उसमें स्कोप नहीं है, इसीलिए मैंने वो हेडिंग भी नहीं दी है कि ट्रेड वॉर. हम्म. ठीक है, बिकॉज वही पॉइंट्स आपके इसमें आएंगे वे फॉरवर्ड में, सो दैट विल बी डुप्लीकेशन. ठीक है, Yes. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन वेयर वी हैव टू राइट व्हाट वी नो rather than what has been asked. ठीक है, वो कोई ऑप्शन नहीं है इसमें. No, sir, I just thought that it is यस, being यू आर करेक्ट. जैसे मैंने कहा कि implicitly पूछा है ऐसा कुछ. हाँ, तो वो उन्होंने कहा है वी शुड राइट दैट, बट दिस इज वन ऑफ दैट क्वेश्चन, फिर अदरवाइज फिर वो डुप्लीकेशन हो जाएगा. हाँ, ठीक yes, है, sir. चलो. Okay, sir. So it's 6:51, you write till 6:53, sorry 7:03. नेक्स्ट वाला इससे खतरनाक क्वेश्चन. So understand this aspect of the answer writing also. When question is very random, जैसे एक आध क्वेश्चन आता है बहुत, जो कि बहुत रैंडम है. जैसे इस साल आया था, आई थिंक इन GS3 with respect to the that nuclear energy वाला क्वेश्चन. ठीक है, in GS2 also there was one question on the tribunal reform amendment of 2021. ठीक है, वो मेजोरिटी लोगों को पता नहीं होता. सो इन सच केसेस देर इज मैक्सिमम 1 or 2 questions where you have to write what you know rather than what has been asked. ठीक है, एक से दो मैक्स. दिस इज वन ऑफ सच क्वेश्चन. डन. यस एवरीवन. ओके, अब WTO का ये अच्छे से याद रखो. Tomorrow I will also share 2 editorials on WTO. Okay, that will also give you the better idea with respect to the functioning of WTO. Next question is, this. Yes. This has been asked in 2022. Next year also you can get a question on this, because again, काफी it has emerged as the very important topic. In GS3 this year you got the question, and in our FLT also we had a question कि India's achievements with respect to the climate diplomacy. So this is question on the climate. Yeah. अगर आपने देखा होगा तो yesterday I think we did 2 questions on the India's energy diplomacy. एक या 2 क्वेश्चन हमने किए थे already, right? One more question is there on energy diplomacy. The second aspect is the climate diplomacy, जिस पे 22 में क्वेश्चन आया था. Next year also you can get a question specifically with respect to UNFCCC. ठीक है, so ये वाला काफी important है. Now, if you read the question, clean energy is the order of the day. Describe briefly India's changing policy towards climate change in various institutional fora
in the context of geopolitics. Yes. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, then give me the structure. Yes, मोनालिसा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका स्ट्रक्चर, just try. Yes. Sir, first we can give an introduction about which can be data-based introduction regarding how much the world is investing in renewable energy, or about Mhm. climate finance that the developed countries had promised $100 billion to developing countries. You know this And- in UNFCCC 29. So 29 conference of parties they agreed for 300 300 billion, yes, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज का डिमांड है 1.5 ट्रिलियन. trillion, yes, sir. दिस इज बेसिकली 1/4 ऑफ देयर डिमांड. So, sir, we can give a data-based introduction regarding how much countries are investing. Then we can talk about significance of clean energy. Then we can talk about India's traditional stance on climate change. And a third heading we can give a change in India's climate change diplomacy. ठीक है. What else? One keyword you have missed. Yes, तन्मय, यहाँ तक तो सही है. Yes, sir. I would also have gone for the data-based introduction in this one. And the second heading is also fine, the clean energy as the order of the day. Third heading, I believe we can go for India's changing policy towards climate change. ठीक है. Then we can also add steps taken, India's recent initiatives ठीक है. in the global order. Okay. What else? This. Okay. So after the introduction, what you will do is the geopolitics of climate change. Okay. Next, India's changing policy. अब यहाँ पे याद रखो कि whenever the question is in terms of the evolution, जैसे इसको वो they can rephrase this कि rather than India changing policy, describe briefly evolution of India's policy towards climate change. ऐसे भी they can ask you the question where they are using the word evolution, or describe briefly India's policy towards climate change in last 2 decades, या फिर last 3 decades, या फिर last 5 decades, या फिर since independence. So basically evolution terms में. So whenever the framing of the question is such, changing, evolution, okay, या फिर in last 2 decades, specifically economics में ऐसे questions बहुत आते हैं. Then you. Sir, I believe this is going to be a little different. Evolution will highlight a continuity aspect. Changing, we have to start the evolution contrast. also highlight the change. सर एवोल्यूशन में थोड़ा सा कंटिन्यूटी वाला एस्पेक्ट रहेगा कि पहले ऐसी थी अभी थोड़ी सी उसमें बदलाव करके हाँ, तो इसके अंदर अपने को changing बहुत ज्यादा nature कॉन्ट्रास्ट पे मतलब फोकस करना है. ऐसे नहीं है कि चेंजिंग नेचर अगर आपको बोला है तो ऐसा थोड़ी ना है कि कंप्लीटली चेंज होता है. तो इंडिया का पॉलिसी टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, डू यू थिंक इट हैज कंप्लीटली चेंज्ड इन लास्ट 50 years पकड़ो, 60 years पकड़ो? देयर इज ऑलवेज सम लेवल ऑफ द कंटिन्यूटी एंड सम लेवल ऑफ द चेंज. ठीक है, ऐसा इंडिया का कोई पॉलिसी बताओ कि वो कंप्लीटली चेंज हो गया है. इवन इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, अगर एलपीजी रिफॉर्म भी अगर आप लोगे, तो हैज इंडिया कंप्लीटली शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सोशलिस्ट एजेंडा?
हुआ है क्या? थोड़ा कुछ हद तक, बट पूरी तरह नहीं. Again, वही, there is some aspect of the continuity, some aspect of the change, even in terms of the foreign policy. ठीक है, हम विश्वगुरु कह रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल देयर इज द कंटिन्यूटी. जैसे हमने कहा कि नाम का ही कंटिन्यूटी इज दिस द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, उसी का कंटिन्यूटी इज इशू बेस्ड पार्टनरशिप या फिर मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी. सो पॉलिसी कंप्लीटली चेंज कभी नहीं होती है. देयर इज ऑलवेज some level of the continuity and some level of the change. Okay, drastic change on the broader level is generally not possible. No, तो आपको चेंजिंग भी पूछे या इवोल्यूशन भी या इन लास्ट 2 decades भी पूछे, यू कैन गिव दी सिंगल हेडिंग. ठीक है, कि चेंजिंग पॉलिसी, इसको यू जस्ट डिवाइड इट इनटू दी फेजेस. फेज 2, फेज, ठीक है, या फिर वो ये भी, they can use the word trend also. Okay, in economics last year they asked the question with respect to trend in India's social security expenditure. ठीक है, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में भी they can ask you this India's approach towards Naxalism or evolution of India's approach towards Naxalism. ठीक है, और India changing policy towards Naxalism. Okay, even if they ask you, basically you have to highlight the evolution और उसको आपको डिवाइड करना है फेजेस में. ठीक है, ये समझ आया यस तन्मय? Yes, sir. तो अब ये वर्ड्स पे आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना है, नॉट जस्ट इन आईआर बट अक्रॉस द पेपर्स. ठीक है, तो इसको फेज में आपको डिवाइड करना है विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट हेडिंग, clean energy as the order of day. What will you write the points? Essential to combat climate change, like IPCC Yes. sixth assessment report. Combat climate change. No. उसको limit. अब Below इसको, as below this is the 1.5. implicit demand, you don't need elaboration. You can simply use the diagrammatic representation या फिर आप इसको limit temperature rise to 1.5 degree. ठीक है, what else? Clean energy is cost competitive. अभी तक तो मतलब ठीक है, कुछ एस्पेक्ट में है बट अदरवाइज नहीं. Social benefits of clean energy, like it Yes. affects the marginal section. Economic social benefits you can write. Social benefits. ठीक है, so women health. Example you can give Ujjwala scheme. What else? Economic benefit you can write. What are the economic benefit? Reduce current account deficit. What else? Healthy lifestyle, changing lifestyles by reducing consumerism. नहीं, क्लीन एनर्जी पे लिखना है ना. रिन्यूएबल एनर्जी फोकस आप लिख सकते हो या फिर फोकस ऑन कार्बन न्यूट्रलिटी you can write. Yeah, carbon neutrality can be a point. One more, India specific key, India's role as Vishwa Guru of sustainability. So ये आपको, ये कीवर्ड आपको याद रखना है, इतने सफिशिएंट है.
ठीक है, so इसमें how will you write this? You will write it after the introduction. Just use the diagrammatic representation in a flow chart. Clean energy as BDE. One, combating climate change, या फिर limiting global warming 1.5 degree Celsius. Okay. Second, health benefits. Example, clean cooking or the under Ujjwala. Yeah. Then self or energy security. And reducing current account deficit. Yeah. Next, India as Vishwaguru of sustainability. ठीक है, ये चार आप इसमें लिखोगे, ठीक है, दिस, या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी targets. Yeah, this. Then you come to the second heading, geopolitics of climate change. Yes. What will be the points? Again, ये points हमने already लिखे हैं previous questions में. इस तन्मय. The carbon border adjustment mechanism. उसको हमने क्या ये लिखा था? Heading, what heading we did? एक तो ठीक है. What was the heading that we gave? Misuse of green tariff. ठीक है, green tariff. इसमें ज्यादा, इसमें भी अगेन ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना है. यूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, फुल फॉर्म लिखना है. सेकंड, यस, वो क्वेश्चन हमने कल 2 बार किया है. ऑयल जियोपॉलिटिक्स इन मिडल ईस्ट. एग्जाम्पल, sanctions on Iran. What else? यूक्रेन रशिया, ठीक है, प्राइस वोलेटिलिटी वो अब ऑयल जियोपॉलिटिक्स में ही आ जाएगा. What else? Weaponization of, yes, China's monopoly in critical mineral supply chain. It controls more than 90%. What else? North-South divide
and climate justice geopolitics. Climate The financing. example differences on this, what was that compensation fund, na 300 billion? No. Yes. Compensation fund in COP29. What else? Hmm. Sir, I think ये तो implicit demand है, इसमें ज़्यादा You have to space क्यों write use 4 करें? points only. I'm giving you the more points. You can get a specific question on this only. Explain the geopolitics of climate change. Fifth, again, climate linked geoeconomics. ठीक है, एग्जाम्पल एक तो आप ये भी देख सकते हो, ग्रीन क्लाइमेट फंड या फिर G20 ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट जो इंडिया के प्रेसिडेंसी में हुआ था, ठीक है. वन मोर इज द क्लाइमेट सिक्योरिटी इंटरलिंकेज. So existential threat to small Pacific island countries. Okay. And last key, it has also led to the identity politics. 7, energy identity politics. The EU as the green regulatory power, India as the, अगेन एक तो हमने विश्व गुरु ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऊपर लिख दिया, तो यहाँ पे लिखो लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, एंड चाइना ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग. ये क्लियर है? दिस इज द जियोपॉलिटिक्स एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज. अब इस पे आपका ठीक है, इस पे आपका एक 10 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है. अब इतने आपको नहीं लिखने, इसमें से यू राइट दिस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. These 4 points are sufficient under that heading. तो आपका पहला page will go for this and this. Okay. On the next page, then you can talk about India changing policy towards climate change in international forum. ठीक है, अभी इसको जैसे मैंने कहा था फेज वाइज हमें डिवाइड करना है, तो कब कौन से फेज में विल डिवाइड? यस, under what phases we'll divide it? No. So I think before 2015 Paris Agreement, that will be the second phase. I'm not sure what the first Before, phase should be. नहीं, उसके पहले आप बिफोर 2000 या 2010 दे दो. Because 1980s तक तो कोई ऐसी क्लाइमेट चेंज की बात होती नहीं थी. 2010 तक भी नहीं था, मोस्टली उसके बाद ही
थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है. So before 2010, then to Before 2010 to 15, 2010, then 2010 to 15. 15, and then the And present third, one, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला आफ्टर 2015. 15. Yeah. ठीक है. सो मतलब वो कहा था ना कंगना रनौत ने कि वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 2014, तो थर्ड फेज हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 2014 या फिर 2015. अब फेज वन. सो फेज वन में हम एक्टिव, तो उस टाइम क्लाइमेट चेंज डिप्लोमेसी सच कुछ थी ही नहीं, राइट. सो वहां पे यू कैन आइदर राइट पैसिव डिप्लोमेसी या फिर डिफेंसिव डिप्लोमेसी. ठीक है. दैट इस फेज में कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी. Earlier, what before 2010, what we demanded was कि the blame lies with the Western countries. So all the efforts needs to be taken by the Western countries. The priority of the developing or priority of the global South is going to be development. तो आप हमें बोलो ही मत. ठीक है. जैसे इसका बिगेस्ट एग्जांपल इज द क्योटो प्रोटोकॉल. उसके अंडर जो लिमिटेशंस थे दैट वेर ओनली फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो कोई था नहीं, राइट. दैट देन कोऑपरेटिव डिप्लोमेसी एज इन ये जो आपका कोपेनहेगन समिट हुआ, इसके अंडर डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीड टू रिड्यूस द कार्बन इमिशंस. यहाँ they also assume the responsibility. In here they started with the cooperation. ठीक है. And in the next stage की leadership phase after 2015, new India phase, Vishwaguru phase, leadership phase. ठीक है. So from 2015 to present. ठीक है. अब इसके अंडर अगेन जो आपके क्लाइमेट रिलेटेड आपको इंडिया के एफर्ट्स पता है ऑन ग्लोबल लेवल. वन, यू राइट अबाउट द पेरिस क्लाइमेट डील, इंडियाज INDC, ये इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है. उसके लिए दो की रिड्यूसिंग द कार्बन इमिशन इंटेंसिटी बाय, कितना था वो, जस्ट अ सेकंड, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. by 33 to 35% by 2030. ठीक है. 40% नॉन फॉसिल फ्यूल. ठीक है. एंड देन कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 billion tons carbon sink. With this, then in Glasgow summit we gave the Panchamrit targets. And here we talked about carbon neutrality by 2070. 2070. ठीक है. Then next, third global south leadership. इसमें you can talk about International Solar Alliance. ठीक है. Second, insistence on CBDR principle. Common but differentiated responsibility. That is, responsibility is common, but it is differentiated in terms of Western countries have to take the larger share. ठीक है. What else? जो अंडर कॉड
कोalition फॉर डिजास्टर या फिर ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी, यू कैन से। So coalition of disaster resilience infrastructure, ठीक है, for disaster resilience. Then in G20 presidency, India went for the Green Development Pact, ठीक है। Then यहाँ पे भी अंडर, अब ग्लोबल फोरा बोला है तो जो भी ग्लोबल फोरम्स है उन्हीं के नाम आप लिख सकते हो अंडर कॉड ना, क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव, राइट, या फिर कोऑपरेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी, सिंपली उसके नाम लिख दो। या अब या फिर कॉड के अंडर जो भी कोऑपरेशन होता है दैट इज थ्रू दी वर्किंग ग्रुप, तो सिंपली एग्जांपल एज सच करो, वर्किंग ग्रुप ऑन ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। देन फोर्थ, सॉरी नेक्स्ट, अंडर ब्रिक्स एंड यस, ठीक है, एडवोकेटेड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, green finance, yeah, and transparent climate governance या फिर environmental governance, ठीक है। yes, global biofuel alliance also you can write that also. Then steps taken by India, इसमें कि रादर देन, अब इसके बियॉन्ड जो भी हमारे स्टेप्स है मोस्टली ऑन दी डोमेस्टिक स्पीयर, ठीक है। नेशनल सोलर दिस नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है, या फिर लाइफ अप्रोच, यस लाइफ अप्रोच, या फिर वन सन मिशन लाइफस्टाइल, ठीक है, या फिर नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट स्कीम, बट इतने ठीक है, उज्ज्वला भी हमारा आ गया है, ठीक है। देन वन सन वन अर्थ वन ग्रिड इनिशिएटिव, तो वो स्कीम्स आप लिख सकते हो एंड एट द एंड यू कंक्लूड, ठीक है। कंक्लूजन में बस जो मैंने स्कॉलर का और बुक का नाम लिया है वो बस याद रखो अच्छे से। यहाँ पे इफ यू सी द आंसर वुड, इंट्रोडक्शन rather than data based, data also I have added, but there is one concept of security scholar बेरी बुझान, ठीक है, जिनका पॉलिटिकल साइंस है उनको पता होगा। अकॉर्डिंग टू हिम सिक्योरिटी हैज बिकम मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अर्लियर द सिक्योरिटी वाज इन इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी वाज कंसीव्ड ओनली एज द मिलिट्री और द मिलिट्री सिक्योरिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बट अभी सिक्योरिटी हैज बिकम मल्टी डायमेंशनल, इट इन्वॉल्व्स climate security, environmental security, gender security, human security, economic security, cyber security, etc. ठीक है। So in that context, climate change has emerged as the global security and geopolitical concern. ठीक है, ये याद रखो, ऐसे में भी जब आप एनवायरमेंटल डायमेंशन आप कवर करोगे तब भी आपको ये लिखना है, ठीक है। देन इंडिया
as the third largest energy consumer has transitioned from climate obstructionist to leader and solution provider. तो ये जो चेंजिंग पॉलिसी है उसको इलेबोरेट, ठीक है, फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट वर्ड आप WTO के कंटेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, वेयर इंडिया इज परस्यूड एज ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, ठीक है, फ्रॉम क्लाइमेट ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट टू क्लाइमेट लीडर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर. Then clean energy as the order of the day, combating climate change, social benefit, women health, Ujjwala scheme, economic benefit, lowering CAD, India's role as Vishwaguru of sustainability. Okay, then geopolitics, oil geopolitics, China's monopoly in critical minerals, green tariff, EU's carbon border adjustment mechanism, north-south divide in climate justice, diplomacy in UNFCCC, ठीक है, क्लाइमेट लिंक्ड जियो इकोनॉमिक्स, G20 डेवलपमेंट पैक्ट, ग्रीन डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी इंटरलिंकेज, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स, ठीक है, या फिर वल्नरेबिलिटी ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इमर्जिंग एनर्जी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, EU as the regulatory, China as the manufacturing, India as the leader. ठीक है, मतलब they enforce the regulation, China bypass them and prepares the substandard, and India gives the speech. That is the basic identity. ठीक है, वो तो इसने आपको लिखने नहीं है. नेक्स्ट, इंडिया चेंजिंग पॉलिसी, अर्ली फेज या फिर फेज 1, डिफेंसिव स्टांस या फिर पैसिव स्टांस. ठीक है, पैसिव स्टांस मैंने इसलिए नहीं डाला बिकॉज इंदिरा गांधी वाज बिट एक्टिव इन एनवायरमेंटल डोमेन, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका हो वगैरह वो सारे उन्होंने ही किए थे. सेकेंडली, वी वेर पार्ट ऑफ ऑल दी ग्लोबल एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू द क्लाइमेट, क्योंकि हम पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली नहीं थी ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है, सो हम सभी का पार्ट है, जैसे वी वेर पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, जिसके अंडर बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन एक्ट हमारा बना है. ठीक है, सो इसलिए मैंने पैसिव वर्ड नहीं यूज किया, रादर वी हैव यूज्ड डिफेंसिव. ठीक है, सो एडवोकेटेड इक्विटी एंड राइट टू डेवलपमेंट अंडर क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, देन अपोज्ड बाइंडिंग इमिशन टारगेट्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. इतने ही दो लिखो, सफिशिएंट. CBDR and respective capabilities also we advocated. Then constructive cooperation between 2010 to 15 की Copenhagen COP and Cancun COP voluntary emission reduction targets. ये डेटा मत याद रखो, बट voluntary emission reduction targets. ठीक है, and during that time also India formed the basic bloc, Brazil, South Africa, India, China, to represent emerging economies. ठीक है, main purpose was to have the common voice in global environmental negotiations. ठीक है, next leadership phase, first Paris Agreement, India's nationally determined contributions, COP26 announced Panchamrit including net zero by 2070. ये एक ही लिखो. Then in 28, global demand for the loss and damage fund. ये ग्लोबल साउथ लीडरशिप, इसमें मैंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस सेपरेट पॉइंट किया. यहाँ पे फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन. ठीक है, सो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज उधर भी जाके आए हैं, छोटी छोटी कंट्रीज है, दिल्ली पुणे इतनी कंट्रीज है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर उधर भी जाके आए, तो वहां पे दे फॉर्म दी फोरम फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज. ठीक है, देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
jointly launched with France to mobilize solar adaptation across 100+ countries. Okay. Then coalition for disaster resilient infrastructure, focus upon the climate resilient infrastructure in developing countries. Then G20 presidency में Green Development Pact and Just Energy Transition for Global South. ये लीडरशिप रोल है. Then Quad Climate Group promoting clean hydrogen, green shipping and resilient supply chains. Again, BRICS and SCO advocated equitable climate finance, green technology transfer and multipolar environmental governance. ठीक है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस में इंडिया के 3 ही कोर डिमांड है. एक, हमें टेक्नोलॉजी दे दो, दैट इज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. सेकंड, हमें पैसा दे दो, ग्रीन फाइनेंसिंग. एंड थर्ड, give us the representation and ensure the transparency in the negotiations. Okay, these are the 3 pillars of the global south related to the climate justice. Okay, so ये 3 advocated under BRICS and SC. Okay, and other efforts, National Action Plan on Climate Change, which acts as a framework, National Solar Mission, Green Hydrogen Mission, One Sun, One World, One Grid, and Indo-Pacific Economic Framework includes clean energy and decarbonization. ठीक है, इसमें से भी ये 4 ही लिखो पहले, उतने सफिशिएंट है. ठीक है, इसमें भी अगर आपको दूसरे स्कीम्स पता है तो यू कैन राइट दो स्कीम्स ऑल्सो, बट ये सबसे मेजर है तो आई हैव एडेड दीज. ठीक है, एंड देन देयर इज वन बुक specifically on the climate diplomacy by Dhanashri Jairam. So as per Dhanashri Jairam, her book name is Climate Diplomacy and Emerging Economies. Okay. India has evolved from naysayer to responsible player in climate diplomacy. ठीक है, अब ये आप इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हो या फिर कंक्लूजन में भी यूज कर सकते हो. ठीक है, ये क्लियर है. अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको दिस यूनिट टू, तो ये इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, सो यू राइट दिस आंसर. इसमें यू विल यूज दी दिस ऐसे फ्लो चार्ट फॉर दिस, एंड ये आपका 1 पेज में यहाँ तक हो जाना चाहिए. इसमें नो नीड टू राइट 7 पॉइंट्स, rather than 7 point you write first, second, third, fourth. ठीक है, 4 या ये 5 लिख, इतने ही लिखो, ये बस याद रखो. देन हियर डिफेंसिव स्टांस में ये 2 ही लिखो. यहाँ पे these 2, उसमें भी शॉर्ट करके लिखोगे कोपेनहेगन एंड कैनकन समिट्स वॉलंटरी इमिशन रिडक्शन टारगेट्स. ठीक है, देन बेसिक ब्लॉक टू रिप्रेजेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज. यहां से आपको फिर जितने हो सकते हैं उतने लिखो. ठीक है, यस उदय. Good evening, sir. हाँ, Sir, first of all, mine in the question itself, my doubt is why shouldn't the clean energy as an order come after the geopolitics of climate change as heading? sorry. I mean, we have started first with the clean energy as the order of the day, and then continue with geopolitics of the climate change. Shouldn't it be the other way? क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? मतलब उससे फर्क क्या, ये यहाँ लिखो, दैट्स फाइन. क्या ये इसलिए लिखा है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस. Because this is like more what you call um,
अब क्लीन एनर्जी एज द ऑर्डर ऑफ द डे पहले लिखो या जियो पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज पहले लिखो, उससे फर्क ज्यादा कुछ पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज दोनों में कोई फ्लो नहीं है इतना ज्यादा। बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, यहाँ हमने, यू कैन से कि हमने पहले इंडिया चेंज इन पॉलिसी क्यों लिखा, वो बाद में क्यों लिखा, एंड जियो पॉलिटिक्स पहले क्यों लिखा, दैट यू कैन से। उसकी वजह से वो फ्लो आ रहा है। पहले हम, वी आर एक्सप्लेनिंग द जियो पॉलिटिक्स, देन वी आर एक्सप्लेनिंग द इंडियाज रोल, दैट इज इन सिंक, बिकॉज ऑफ दैट वी डिड दैट। बट ये दोनों तो अलग अलग है, उसकी वजह से उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। And sir, the points which you have given in geopolitics or politics, like green tariff, oil politics, China's uh, China climate linked geoeconomics, climate security interlinkage. So it's not coming organically for me. Like I need to remember these. हाँ, तो ये टॉपिक ही वैसा है ना, अब क्या करेंगे। बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिकली इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज इट डजंट फिट इनटू द फ्रेमवर्क दैट वी हैव। एंड सेकेंडली, आई बेट कि आप में से किसी ने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं होगा, क्लाइमेट डिप्लोमेसी हार्डली पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं। ठीक है, तो उस वजह से, बट अभी आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर सपोज नेक्स्ट ईयर इसी पे क्वेश्चन आ गया, या फिर इफ इन दी टेस्ट इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन ऑन दिस, तब वो ऑर्गेनिकली ऑटोमेटिकली आंसर में आ जाएगा। ठीक है, दिस कंसेप्ट इटसेल्फ इज वेरी न्यू। And sir, here in the changing policy, you have mentioned it like pre 2010 that we had this environmental policy of Act of 1986 and the Act we had the 42nd Amendment we included for Article 48A. So उतना why don't we mention उतना it over पीछे here? नहीं जाना है, तब तो फिर एंशियंट टाइम से जाओगे आप। No, that is after independence. Right? उतना पीछे नहीं जाना है, नॉट नीडेड। Okay. इन्होंने अगर स्पेसिफिकली बोला होता आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखेंगे। अदरवाइज बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, इनमें ही डिवाइड करो, दैट इज बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014, उतना ही करो। उतना मतलब जरूरी नहीं है। अगेन, जो हम ये 97 या फिर उस टाइम हमारा जो अप्रोच था, वही अप्रोच 70s में भी था। ठीक है, तो उतना लिख सकते हो एक पॉइंट, बट जरूरी नहीं है। Thank you. So it's 7:51. Write it in 12, 10 minutes. हो गया सभी का? राइट दिस, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, अदरवाइज यस। हो गया सभी का? यस, किसी का बच्चा है? ओके, सो विल डू वन मोर क्वेश्चन जो आप असाइनमेंट में लिखोगे। तो थोड़ा सा हेवी वाला क्वेश्चन लूँ ऐसे ही, या फिर जो हमारे फ्रेमवर्क में बैठेगा वो वाला लूँ? क्योंकि क्वेश्चंस आज के बहुत एनालिटिकल है, ग्लोबल ग्रुपिंग्स पर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन ले ले। ठीक है, ओके। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, बिकॉज इट इज अगेन related to the current, which can be asked in next year also. Yes. The expansion, and again it was in 2023 to 2026 में फिर से आने का स्कोप है। ठीक है, तो the expansion and strengthening of NATO and the stronger US Europe strategic partnership works well in India. What is your opinion about this statement? Give reasons and examples to support your answer. ठीक है, यस। तो अगेन
This is the opinion based question. So in opinion based questions, what you want to try to give me the structure of this? काफी simple है. Anyone? Hmm? Who wants to give me the structure of this? कोई नहीं. Yes, Pratik. So to begin with, we can talk about the objectives of NATO and when it was found. Hmm. Then the first heading should be the expansion and strengthening of NATO. ठीक है. Plus context. And second would be US Euro strategic partnership and ramifications for India. ठीक है. And then because they have asked about the opinion, the ramifications will be both ones that work Yeah. for India and ones that do not work for India. Works well for India. Arguments in favor. Arguments against. Against. ठीक है. अब ये expansion, strengthening, and the stronger US Europe strategic partnership, इसका elaboration it can give into introduction itself. ठीक है. Which will add the context part में. Okay. So NATO is a collective security organization. ठीक है. ये याद रखो. Collective security principle. Collective security principle means the attack on one member is considered as attack on everyone, and all have to declare the war against that particular attacker. Okay, so that is the principle of collective security. इसीलिए Russia is so fearful of Ukraine joining the NATO. ठीक है. So it is a collective security organization established during the Cold War. ठीक है. एंड इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उतना उसका ओरिजिन सफिशिएंट है. एंड द कंटेक्स्ट इट वाज रिवाइटलाइज्ड आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर. That then India specific, though India is not a member, but इसको ऐसे आप कर सकते हो, not a member, this development aligns with many of India's strategic interest in ensuring rule-based international order. या फिर इतना भी आप लिख सकते. Though India is not a member, this development aligns with many of India's strategic interest. ठीक है. ये now works well for India. Again, we'll develop our framework. Geopolitical, geo-economic, defense and security. कनेक्टिविटी तो कुछ आएगा नहीं इसमें. मल्टीलैटरलिज्म. Yes. Now who wants to give me the points under each? Yes. पूछो. Again, it's in context of China, Russia. ठीक है. So it, from geopolitical perspective, the strengthening of NATO can balance emerging China, Russia, Iran axis. ठीक है.
So this can balance this. Otherwise, which threatens India's position in Eurasia. Second, what else? Why NATO has been strengthened? Because of the Russia-Ukraine war. Okay, what is the principle that NATO is advocating in favor of Russia, in favor of Ukraine? That is the NATO's advocacy for territorial integrity in context of Ukraine is similar to the or is equally advocated by India in context of China. ब्रैकेट में आप गलवान क्लैश लिखो. Right. What else? Again, with respect to the geopolitics, again, what they have said, the stronger US-Europe strategic partnership, matlab, they are again forming a bloc. So it can also help building stronger relationship with West. Okay. In terms of geoeconomics, again, greater scope for collaboration in technology domain. Next, key with respect to the strengthening US, Europe, या फिर NATO, it will ensure stability in the Europe. Right? उसका objective वही है ना, stability in the Europe. So the greater stability in Europe can strengthen India's economic relations. ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? रिसेंट इंडिया यूके FTA, राइट? वही पॉइंट. डिफेंस एंड सिक्योरिटी, अगेन ग्रेटर स्कोप फॉर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन इन मैरीटाइम डोमेन इन Indo-Pacific. ठीक है. Next, it can ensure the greater access to advanced technologies. No. One more important thing is as the US-Europe strategic convergence strengthens, that means European power will also share the responsibility for stability in the Europe. उसकी वजह से क्या हो जाएगा? US will have the greater bandwidth to focus more on Indo-Pacific, which aligns with India's Indo-Pacific vision. Okay, so sharing of responsibility by European countries can create great or can lead to greater US focus in Indo-Pacific, which aligns with or which can help contain China. Right.
Again, multilateralism की stronger Europe can support India in UN against terrorism. एंड सेकंड, जो रूल बेस्ड ऑर्डर या फिर जो ग्रेटर कन्वर्जेंस इन मल्टीलैटरल फोरम, जैसे रशिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना आर दी अथॉरिटेरियन कंट्रीज, राइट? इंडिया इज सेमी अथॉरिटेरियन, वो भी थोड़े दिन के लिए हम रहेंगे, बट दीज आर दी कंप्लीटली अथॉरिटेरियन कंट्रीज, वेयर एज यूएस एंड यूरोप आर दी डेमोक्रेटिक कंट्रीज. So we have the convergence in terms of the values. Okay, so value convergence in terms of rule-based order, democracy, human rights. ठीक है, ये समझ आए पॉइंट्स? यस, ये क्लियर है? अब इसमें अगर लिखना है तो यस, कॉड भी लिख सकते हो, ग्रेटर कोलैबोरेशन थ्रू कॉड अकुस एंड I2U2 तो नहीं आएगा, कॉड एंड अकुस लिखो, एंड थ्रू minilaterals like India, Australia, France. G7 नहीं आएगा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7. ठीक है, ऐसे. देन अगेंस्ट में again from geopolitical perspective it may impact India's strategic autonomy and issue based partnerships, जैसे example sanctions on Russian oil and defense exports. Okay, second key, the fear of USA's bait and bloodletting policy as in Ukraine. Right. Bait and bloodletting मैंने कल एक्सप्लेन किया था, पता है ना? As seen in Ukraine can be replicated in India China relations. राइट, इंडिया चाइना में भी वो सिमिलर कर सकते हैं, उससे इंडिया भी डैमेज हो जाएगा, चाइना भी डैमेज हो जाएगा. ठीक है, देन थर्ड, यस, फ्रॉम व्हाट एल्स, a return of Cold War era bloc politics and bipolarity. Bipolarity between, अब ये भी हमने किया था, G2 US चाइना, है ना? This, what else? अगेन इसमें वही लिखो ना कि इंडियाज ट्रेडिशनल
relations with Russia may come under strain. इसका एग्जाम्पल की reduction in Russian oil purchase अभी किया ना रिसेंटली. यस. और क्या लिख सकते हो? मल्टीलैटरल पर्सपेक्टिव से. यस. चैलेंज टू स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग. पॉलिसी. इसका एग्जाम्पल इन SCO एंड क्वाड. इंडिया इज द मेंबर ऑफ बोथ अपोजिंग ग्रुप्स. ठीक है. तो अभी तक तो चल गया, बट इसके आगे इट मे लीड टू दी चैलेंज. यस. और अगेन जो कल ही हमने पॉइंट लिखा था, डिपेंडेंसी और ग्रेटर अलाइनमेंट विथ वेस्ट कैन लीड टू डिपेंडेंसी. यूएस के कंटेक्स्ट में लिखा था ना हमने, बेनिफिट्स ऑफ यूएस इंडिया trade defense pacts over US Russia. So in the issues we wrote about the dependency. So same यहाँ पे वही हो सकता है. Greater alignment with NATO can foster the dependency on the West. Okay. और क्या लिख सकते हो आप? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. What else we can write? Yes. US forcing India towards Quad part of military box goes against strategic autonomy. ठीक है. तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमने लिख तो दिया है. ठीक है. ब्लॉक पॉलिटिक्स भी हमने लिख दिया है. व्हाट एल्स? थिंक. अब जियो पॉलिटिक्स हो गया. ठीक है. अब जियो इकोनॉमिक्स यहाँ पे मोस्टली नहीं आएगा. देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी आ गया. ठीक है. मल्टीलैटरलिज्म पर्सपेक्टिव से. अगेन ब्लॉक पॉलिटिक्स आपका हो रहा है ना, बिटवीन चाइना रशिया वन साइड, यूएस यूरोप अदर साइड. So that may further undermine the UN, right? So it may lead to the deepening crisis of credibility of UN due to P3, P2 divide. And it may lead to, or it may delay UNSC reforms. है ना? वो डिवाइड अगर जितना बड़ा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दैट डिवाइड will further create the greater fault lines under the UN, which will delay the UNSC reforms जो हमें कब से चाहिए. ठीक है. So हो गया. कितने पॉइंट्स हो गए? तो here you have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो 60 40 में हमारा बैठ रहा है. Then you give the way forward. So way forward, multi-vector policy.
based upon enlightened self-interest, right? Second, कि जो हमने देखा था कि अगर बायलैटरलिज्म सॉरी मल्टीलैटरलिज्म डिक्लाइन हो रहा है, तो इन दैट केस व्हाट यू डू, स्ट्रेंथन bilateral relations. ठीक है. थर्ड, अब यूएस के sanctions on Russia we talked about, so getting waiver for Chabahar port and Russian oil imports. ठीक है. What else? And again, in such context, to reduce the dependency, promoting Atma Nirbharta in defense sector. इसका एग्जाम्पल हमने कल ही देखा था, मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड. ये आपके 4 पॉइंट्स आ जाएंगे वे फॉरवर्ड. एंड देन यू कैन कंक्लूड कि 10 फॉर इंडियाज एम्बिशन ऑफ विश्व गुरु, या फिर फॉर इंडियाज ग्रेट पावर एम्बिशन. या फिर देर इज वन interesting quote that I recalled while preparing the model answer, कि the former NSA, according to Shiv Shankar Menon, foreign policy is about mini-maxing. Okay. What is mini-maxing? Mini-maxing is basically minimizing harm and maximizing benefits. ठीक है. Thus, multi alignment and strategic autonomy is the way forward. Remember this word mini-maxing. ये भी आप कहीं पे यूज कर सकते हो. ठीक है. अब ये वाला फ्रेमवर्क में बैठ रहा है हमारे. इसको बस आपको थोड़ा सा अच्छे से सोच के ये करना है. अब इसमें जियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप ये भी कर सकते हो कि द थ्रेट ऑफ और दी दिस सप्लाई चेन डिसरप्शंस because of China's monopoly in critical minerals. So that can again go against India's interest. Or it can also further intensify India-China this clashes along the borders. मतलब कि वो ऐसे आप पुट कर सकते हो फ्रॉम डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, स्पिल ओवर इफेक्ट इन साउथ एशिया, या फिर स्पिल ओवर इफेक्ट अलोंग इंडिया चाइना बॉर्डर. जो अभी रशिया यूक्रेन का वॉर जैसे चल रहा है, so that can have this spillover effect. India aligned with the West, because so China will automatically feel threatened. So it can have this spillover effect in the South Asia or the India-China border. Okay. Then India, as India is dependent upon this,
और वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन बाय चाइना. ठीक है. यस. यस. वसुंधरा. Sir, recently you have said that spillover effects on the India-China border. It is similar to the point which you had mentioned Weight that and USA is bloodletting. same ही बात है ना? Same. Okay, and this strategic autonomy which you have mentioned in the second point, it is like threat to the strategic autonomy because recently EU had imposed sanctions on India taking fuel from Russia. That is the point, right? EU also, USA also has imposed. हाँ, वही वाला है ना? हम्म. Okay. ठीक है. तो ठीक है. ये ब्रेनस्टॉर्मिंग समझ आ गई. Now if you see the model answer, again, NATO, a Cold War era collective defense alliance, has been revitalized under Russia's invasion of after Russia's invasion of Ukraine, and the US Europe strategic convergence is strengthening across military, economic, and technological domain. या फिर अब इसको सिंगल सेंटेंस करो. नेटो, a collective security alliance, has been revitalized after Russia-Ukraine war, strengthening US-Europe strategic convergence across military, economic and technological domain. ठीक है. उसके नीचे सेकंड पैराग्राफ एक सिंगल सेंटेंस लिखो. दो इंडिया इज नॉट अ मेंबर, this development aligns with, or this development has ramification, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव हम दोनों दे रहे हैं, फॉर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट. ये वाला इंट्रोडक्शन. दिस डेवलपमेंट हैज ramification for India's national interest. And then NATO strengthening works well for India. A stronger NATO balances Russia, China, no limits partnership. Okay. So whenever you will be writing the points on Russia, China getting closer, so आप use this keyword Russia, China, no limits partnership. Okay. Or if you want to talk about China, Pakistan getting closer, so the China, Pakistan axis, ऐसे लिखो ब्रैकेट में all weather friendship. ठीक है. तो दे डिस्क्राइब दैट एज द ऑल वेदर फ्रेंडशिप. ठीक है. बट जब पाकिस्तान में बाढ़ आता है तब चाइना कहीं नहीं रहता है. दैट इज नॉट द ऑल वेदर, वो कहने को है. ठीक है. बट ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप दैट कुड अंडरमाइन इंडिया स्पेस इन यूरेशिया. सेकंड, NATO stand against territorial aggression, or NATO stand against Ukraine invasion reinforces sovereignty principle. Okay. Resonating India's stance on border integrity. It is similar. NATO is taking this similar stance which India has taken after the Galwan clash. Right. Or in context of POK also. POK से बेटर है चाइना ही मेंशन करो. ठीक है. Then strategic convergence with the West. NATO's pivot to Asia Pacific opens opportunities for India-NATO partnership in maritime and cyber security. So in Indo-Pacific, as NATO is strengthened, so India can cooperate with NATO in Indo-Pacific in maritime domain. Next, countering China. Stronger transatlantic alliance. NATO is basically transatlantic, वो इंडो पैसिफिक नहीं है. जो हमने कल भी देखा था कि हाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड फ्रॉम ट्रांसअटलांटिक टू इंडो पैसिफिक. सो ट्रांसअटलांटिक इज यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका. तो अगर यहाँ पे ये नहीं, फिर नाटो भी लिख सकते हो. स्ट्रेंगर नाटो अलाउंस यूएस शेयर टू यूएस
to share security responsibility with Europe, freeing bandwidth for Indo-Pacific focus under Quad and POS. Then it can give access to India in cutting edge defense technology and enhanced intelligence sharing. For example, India, France, Rafale deal. Next, multilateral perspective say value-based convergence, shared democratic values, human rights, and rule of law. Okay, example, India's participation in Summit for Democracy, जो यूएसए ने कन्वीन की थी. ठीक है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्लो, स्टेबिलिटी इन यूरोप कैन फैसिलिटेट greater cooperation in trade, connectivity, and technology domains. Example, recent India UK trade deal. ठीक है, या फिर इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप TTP, जो पिछले क्वेश्चन में था. Challenges, reviving Cold War style bipolarity, which goes against India's principle of strategic autonomy. USA's policy of bait and bloodletting by prolonging Russia-Ukraine war undermines India's policy of peaceful resolution of dispute. और या फिर कि यहाँ पे peaceful resolution of dispute is under पंचशील, so ब्रैकेट में पंचशील लिख सकते हो. ठीक है, या फिर can be replicated in India's north border. Next, NATO's confrontation with Russia complicates India's long-standing defense and energy ties with Moscow. Example, sanctions on Russian oil and defense. Next, tighter US-Europe nexus could monopolize advanced technologies and make India dependent on the Western supply chains. Okay, simply आप लिखोगे it can increase India's dependency on the Western countries. Okay, for technology or cutting edge technology and equipments. Okay, then it can weaken Eurasian platforms like SCO and BRICS, which can limit India's influence in Central Asia. Then ये वाला ठीक है, नहीं लिखा तो भी, but यहाँ से आप points लिख सकते. Then in way forward, what you can give, strategic autonomy with issue-based partnerships based upon, या फिर issue-based partnerships based upon enlightened self-interest, waivers for Chabad and Russian oil and defense imports, strengthening bilateral relations with EU and other European powers like UK. Example, early conclusion of India-EU FTA and promoting Atmanirbharta in defense sector. Okay. And as per Shiv Shankar Menon, foreign policy is about minimaxing, that is minimizing harm and maximizing gain. Multi-vector diplomacy is the way forward. Way forward type conclusion भी आ जाए. ठीक है, ये आंसर लिखोगे तो आपको 15 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे. So now you write this answer and then we'll end today's session.